हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा गोदरेज कंज्यूमर लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। Godrej consumer product with a target price of rupees 1100. The current market price of Godrej consumer product is rupees 972.25. 1100 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। करंट मार्केट प्राइस 972.25 with a target price of rupees 1100. Godrej Consumer Product Incorporated in the year 2000 is a large cap company having a market capital of rupees 99,477.57 crore, operating in FMCG sector. एक FMCG कंपनी है जी, Godrej Consumer Product। Godrej Consumer Product Limited key product revenue segment include home care, personal care, hair care. Other operating revenue for the year ending 31st March 2022. Okay, financials. For the quarter ended 31st December 2022, the company has reported a consolidated total income of rupees 3,642.07 crore, up 6.13% from last quarter. Total income of rupees 3,431.79 crore and up 9.54% from last year same quarter. Total income of rupees 3,324.99 crore. Company has reported net profit after tax of rupees 546.34 crore in latest quarter. Okay, company has BSR and Company LLP as its auditors as on 31st December 2022. The company has a total of 102 crore shares outstanding. Okay, investment rationale. GCPL registered good all-round recovery in the performance in Q4 final year 2023 with key business such as the domestic H1 and Indonesia business registering sequential improvement in the performance. Okay, with a strategy in place, management is confident of posting gradual recovery in sales in the coming quarters and targets to achieve double-digit growth over. Okay, promoters FII Holdings promoters held 63.21% stake in the company as of 31st December 2022, while FIIs own 24.04%, DIIs 6.73%. Okay. Okay, so guys, Godrej Consumer Product Limited with a target price of rupees 1100. The current market price of Godrej Consumer Product is rupees 972. ऑपरेटिंग इन FMCG सेक्टर। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। बोलो राधे राधे।